हे गाइस, वेलकम बैक टू सरताज सर की क्लास। यार आज मैं थोड़ा सा फ्री बैठा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन किसके साथ करें। अपने किसी दोस्त को फोन करूं तो जरूरी नहीं कि वो मेरे लिए फ्री हो, या फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढूं कि जिसके साथ मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकूं, लेकिन कोई मेरे लिए इतना खाली कब का बैठेगा क्यों। और हाँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर मुझे कुछ पूछना हो, कोई मेरा डाउट हो, तो सामने वाले के पास इतनी नॉलेज भी तो होनी चाहिए ना कि भाई वो मुझसे पूछ सके। अब जैसा आप मुझसे पूछ लेते हो कमेंट सेक्शन में, मैं किससे पूछूं? या फिर मैं 24 घंटे तो आपका रिप्लाई कर नहीं सकता, तो आप किससे पूछेंगे? और कभी कभार मुझे भी कुछ ना कुछ पूछना पड़ता है, तो आखिर ये डाउट्स कहाँ क्लियर कर सकते हैं इंग्लिश के बारे में। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उसी का यूज करते हुए मैं आज इंग्लिश में बातचीत भी करूंगा एक फॉरेनर से, एक विदेशी टीचर के साथ। और पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है कैमली एप्लीकेशन। और कैमली इंडिया का इकलौता ऐसा एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम पूरी दुनिया में मौजूद अलग अलग कंट्री के टीचर्स के साथ वन ऑन वन, फेस टू फेस लाइव क्लासेस ले सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस या कोई भी कंट्री हो, वहां से हम लाइव जुड़ सकते हैं और उनसे क्लासेस ले सकते हैं। और कैमली पर जो टीचर्स होते हैं ना, वो वेल क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, फ्रेंडली है, जो आपके वीक पॉइंट को देखते हुए आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। कभी भी आपको जज नहीं करेंगे कि बेकार बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो। हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे कि यार क्या बोल रहे हो आप, बढ़िया, और खुद आपसे प्रैक्टिस करवाएंगे। और हाँ, कैमली पर ट्यूटर्स 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल होते हैं, यानी कि आपको वेट करने की जरूरत नहीं है कि यार इतने टाइम पे प्रैक्टिस कर सकता हूं, अभी करूं नहीं करूं। 24 घंटे 7 दिन, दिन हो या रात, आप कैमली पर किसी भी समय ऑन आइए, लाइव आइए और बस प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कैमली पर आप ना अपना एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि आपको इंग्लिश सीखनी क्यों है। जैसे कि आपको इंग्लिश आईएलटीएस जैसे किसी एग्जाम के लिए सीखनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सीखनी है, बिजनेस के लिए सीखनी है, ट्रैवल के लिए सीखनी है। आपका कोई भी मोटिव हो, आप कैमली के जरिए इंग्लिश सीख भी सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब चलिए, कैमली पर मैं कनेक्ट होता हूं एक ट्यूटर से, लेकिन हाँ, आपको एक राज की बात बता दूं पहले, और वो ये है कि मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसके जरिए आप कैमली को 50% के डिस्काउंट पर यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ 2500 रुपए तक के आपको गिफ्ट भी मिल सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। वीडियो कैसे देखोगे एंड तक। अभी फिलहाल आगे स्किप मत करना, पहले ये कॉन्वर्सेशन सुनो, एंजॉय करो। मैं बहुत बेसिक स्टाइल में बोलूंगा जानबूझकर, ताकि आप मोटिवेट हो, आपको लगे ये हाईफाई इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, आराम आराम से बात करें। तो चलिए पहले कॉन्वर्सेशन करते हैं कैमली के एक ट्यूटर के साथ। हाय। Hi, hello, I am Janet, your tutor. It's lovely to have you in my classroom. Welcome. What is your name? Thank you so much. I'm so happy to meet you. My name is Sartaz. Okay, that's amazing. And where are you from, Sartaz? I'm from India, New Delhi. New Delhi is the capital of India. Basically, I'm from New Delhi. And what about you? From where are you? So I am from England. I spent all my life in England up Wow. until this year. And this year I moved to Okay. Bulgaria. Hmm. I came here on Cambly to do conversation because I was free. So I thought that I should do practice. And I find that Cambly application is the perfect application for doing practice with the professional teachers like you. Yes, it is, because you can choose when and where you want to do it. And even if you only have 15 minutes spare in the day, you could just book 15 minutes, come on and find a good teacher that actually you can have Right. a quick chat with and be learning all the time. So it's very flexible for you. Mm, Yes. right. So have you ever been in India? Have you ever come to India? I've never been to India. No, I've never been to India, but it's I hear it's a beautiful place, and now I'm Mm. retired. I can travel, and I can also travel with my laptop, and I can still work on Cambly. So that's a double whammy. Yes. Right, right. So, how's the weather in England? Because in India, especially in New Delhi, we are having winters. It's actually the starting of winters. So, we have the temperature around 11, 12, or 11 degree, 12 degree. What about England? How's the weather over there? Okay, so in England, it is autumn at the moment, and it's very rainy and it's quite cold, a little bit like your temperature. It's about 11 Okay. degrees, 12 degrees, Oh, sometimes a little bit warmer, but at night it dips down maybe to about 5 or 4. And we're getting to the time hmm. where it might actually drop to zero and we get a frost. Uh, Yeah, Great. yeah. But I heard that during the time of Christmas there is a snowfall.
in England, is it? In years gone by, it was more likely to find snow falling in the winter time, sort of from November, December onwards, maybe January. But it's less likely these days. These days, the last few years, we haven't really had much snowfall. So if you go to the top of England and you go to Scotland, then you would find snowfall there, definitely. Oh, Not I see. necessarily in London. Okay. The Christmas is around the corner, and I know that in England people celebrate Christmas. What's your preparation for the new year? My preparation for the new year is, well, I like Christmas, so I'm a mum in my not being a tutor time. So, and I have grandchildren. So I like to do the shopping. I like to decorate the house. I like to do the Christmas dinner. And I'm exhausted by the end of it, but I absolutely love it. And especially the decorations, I never want to take them down. They go up very quick and they stay up for a long time. But in the new year, my plans for New Year are to do more teaching and to get better at it, because I'm fairly new at teaching online, although I've done teaching in person pretty much all my career. So online it's just another form of teaching. Yeah, so I'd like to perfect that. Okay, and you are helping so many people. It is very respectful job. Yes, absolutely. Absolutely. And it's good to help other people. I know what it's like as a tutor to be able to help other people to learn. I also know how difficult it can be to learn a different language, because at the moment I'm learning Bulgarian. So it is difficult, and I think that gives me some empathy for my students. I hope that one day you will come to India and I could meet you, because you're really such a nice teacher, and I'm getting so many good things from you. I can learn so many things from you. I can ask so many questions to you. So really, it was a beautiful and great meeting with you. Thank you. That's really kind. But yes, there's lots of things you can learn from being online with an English teacher through Cambly, because we can do conversations. We can just chat and be very informal. We can also do lessons in various platforms. So basically, we could do the beginners, get into more advanced as well. So you can really just choose what you want to do. And one time you may want to just chat, another time you might think, oh, I want to do a lesson. What am I interested in? And you can look through the library and you can actually choose something yourself. So in that way, it's really good. And you can target your own learning. And I think if you target your own learning, you're much more likely to retain the information and move on quickly with your learning of the new language. So Cambly is very suited to that. Yeah, you're right. I always recommend Cambly to all my students. It is really good. So it was really a beautiful conversation with you, teacher, and really thank you so much for your time. And I really had a great time on Cambly, and I really had a very good time with you. And really, it was beautiful talking with you. You're welcome. That's what I'm here for. If I can help you, I'm happy to do so. Thank you very much for your compliment. Thank you so much. Thanks a lot. Bye-bye. Bye-bye. Have a great day. देखा कितना आसान तरीके से मैं इंग्लिश की प्रैक्टिस करता हूं। अब चलो आपको वो ट्रिक बताता हूं जिसके जरिए आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा पूरा। भाई देखिए, कैम्बली एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए जल्दी से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर डाउनलोड किया हुआ है तो वहां पे साइन अप कीजिए और कोई भी 6 महीने वाला या उससे ऊपर का प्लान चूज कीजिए। अब वहां पर मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए SC50 ऑफ। SC मतलब सरताज क्लासेस, लेकिन शॉर्ट में लिखना है। वो कोड नीचे देख लो लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल वैसी स्पेलिंग लिखनी है। अब जैसे इस कोड को आप यूज करते हैं तो आपको आपके प्लान पर 50% का ऑफ मिल जाएगा और साथ ही साथ 25 रुपए तक के गिफ्ट जीतने का भी मौका मिलेगा। और ये ऑफर मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है खास तौर पे, इसलिए मेरा स्पेशल प्रोमो कोड बना के दिया है ताकि आपको फायदा पहुंचा सकूं। तो जल्दी से कैम्बली एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
हैं, यूज कीजिए मेरा प्रोमो कोड और इस ऑफर को ग्रैब कर लीजिए और कैम्बली पर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए फिर मिलता हूं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।